Okay. So I think in the previous session we have discussed the chapter number 3, that is related to the remuneration, wherein we have discussed section number 196 to 205. Fine. 196 starting, 197 remuneration. Over there, most important part is our schedule number 5, which is bifurcated into 4 parts: part 1, 2, 3, and 4. Part 1 basically remuneration payable without approval of the central government. मुझे तो याद है, आप लोग याद रखते हो कि नहीं? Appointment. Part 1 is related to the appointment of the WTD MD and manager without approval of the central government. Part 2 related to the remuneration, which includes 5 sections, section 1 to 3, 4, 5. बराबर है? Third part related to the in relation to part 1 and 2, and the fourth part related to the exemptions to the certain class of companies. The overall remuneration shall not exceed 11% of the, and that net profit is to be calculated with reference to section number 198. बराबर है? So we have discussed section 196, 197, 196 related to the appointment. The period of the appointment, reappointment of maximum of 5 years. वो हमने देखा हुआ था. And the appointment of the MD and the manager cannot be, taken place simultaneously. एक साथ पे होगी नहीं. बराबर है? वो हो गया. Section 204 we have discussed about the secretarial audit. By secretarial audit. बराबर है? That is to be conducted by the practicing company secretary. MR3 form number होता है. ठीक है, and it is applicable to the listed company, it is applicable to the private company with reference to the paid up share capital and the turnover. बराबर वो चीज हमने देखी थी. And the last one is of the outstanding borrowings and the deposits. Okay, that is the third criteria. Now if you move further, come to the next chapter, triple I. The triple I means we can say related to the inspection, inquiry and investigation. Inspection, inquiry and इन्वेस्टिगेशन, ये तीनों चीज में आपको सीक्वेंस में रखना, तो पहले कौन आएगा? क्या? Who comes first? मुर्गी या अंडा? नहीं, उन्होंने एक सीक्वेंस में ही दिया है. They are very smart. सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में इंस्पेक्शन स्टार्ट करोगे. इंस्पेक्शन में you found that certain suspect sort of thing, then you will try to inquire, and over there you find there is a possibilities of the red flags, or we can say the warning signals, then you may go with the investigations. Correct? So that is the case. So here basically this हमने जो last section छोड़ा था वो 205, 204 related to the secretarial audit, 205 is the functions of company secretary. बराबर? अभी आज आगे बढ़ते हैं. We will start with the section 206 and it ends with the 229. Basically suggest इतना ज्यादा यहाँ से नहीं आएगा, because it is a procedural part. बराबर है? Inspection इसे ऐसा करना है. This is a story sort of thing. So there is no any efforts, more efforts that you have to give particularly for this aspect. Section 206 to 229. Simply जैसे जैसे घर पे बातें करते रहते वैसे वैसे बातें करते रहने का कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा मैटर होगा. There is no any provisions like schedule 5, section 1, part 1, ऐसा कुछ यहाँ पे होगा नहीं. Simply I want to go for the investigation, I want to go for the inspection, then inquiry. तो किस हिसाब से किसको inquiry handle करने के लिए भेजे? In a day to day life, when you are reading the newspaper or when you are watching the news channels, वहाँ पे बोलेंगे कि ये केस तो CBI को ही देना पड़ेगा. तो फिर CBI इन्वेस्टिगेशन. बट इन्वेस्टिगेशन में कब जाएगा? जब आपके पास उसका कोई रिपोर्ट होगा. ठीक है? इफ एनी केस पे मान लो कि भाई कोई केस हुआ, फॉर एग्जांपल रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, उसका रिपोर्ट बना, फिर रिपोर्ट से पता चला कि भाई देयर इज समथिंग सस्पेक्ट, तो वो रिपोर्ट के ऊपर से, वो इंस्पेक्शन के ऊपर से आप इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हैं. मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दोज हु आर इन द ऑपोजिशन साइड, दे विल से नहीं ये केस तो सीबीआई को देना पड़ेगा. बराबर है? उसका मतलब वो इन्वेस्टिगेट. बट कौन से बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे वो लोग? इंस्पेक्शन के बेसिस पे. इंस्पेक्शन का रिपोर्ट तैयार होगा, उसके बाद वो बेसिस पे कि भाई अभी इसके साथ जाओ. क्लियर? सो नाउ लेट अस स्टार्ट. जब आपको डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करनी थी तो डायरेक्टर्स के लिए डी नंबर होना चाहिए. डी नंबर के लिए आप क्या करोगे? पहले आप इंडिविजुअल थे, आप एप्लीकेशन करोगे. किसको एप्लीकेशन करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको डेलीगेट किया है? आरडी को डेलीगेट किया हुआ. बराबर है? अच्छा, आपने अप्लाई किया, कितने दिन के अंदर आपको डी नंबर मिलेगा? अभी इट इज नाउ यू बिकम द डायरेक्टर, डी नंबर आ गया. नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर टू इन्फॉर्म द डीन टू
In how many days? Now it is a duty of the company to inform to the ROC कौन है? रजिस्ट्रार. आपने डॉक्यूमेंट्स किसको सबमिट करवाए? ROC को. बराबर है. तो पावर ऑफ अ रजिस्ट्रार सेक्शन 206 पावर ऑफ अ रजिस्ट्रार टू कॉल फॉर IEND. ये तीन वर्ड याद रखना भाई. IEND. What is IEND? I माने information, explanation and documents. There are the three things. The chapter is triple I. But power of the registrar to call for the information, explanation and documents. Information mangwa sakti hai. Explanation माने you have to provide the justifications. And the third one is of any documents required. तो फटाफट company documents किसको फाइल करती है? Registrar माने ROC को. If the opinion of the ROC sum I, E and D is required. I hope you understand. I hope I'm not going fast. समझ में आ रहा है ना? हाँ. So if at the opinion of the ROC, if the some information, explanations or the documents, if it is required, then registrar will send a written notice related to I, E, D. किसको भेजेगी? Now it is a duty of a company to provide the details to ROC. अभी details बोलो उसका मतलब IED. बराबर है? If the notice is served to the past officers, then it is again a duty to furnish such to the registrar. I hope it is clear, guys. Barabar, this is now moving further. This is the power of the registrar to call for the IED. Call for information, call for explanation, call for document. Now, power of the registrar to underline कीजिए, ये box पे underline कर दो, inspect the books of account. सर कब मंगवा सकता है? तो भाई एक तो आपने प्रोवाइड ही नहीं किया. If such information is not furnished, या तो you have provided but it is provided inadequately. It is provided inadequately and unsatisfactory state of affairs exists in a company, then it is the powers lies with the ROC that they can demand from the company. Registrar also pass an order to produce the books of accounts for the inspection to the company. So I hope 206, I think very simple. ROC has a power to call for the information and the inspection. दो मैटर क्लियर हो गई. आगे बढ़ते 206 अगेन. किसके लिए बोला था? इंस्पेक्शन. तो पहला आई खत्म हुआ. अभी वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास आए. किसके पास आए? अभी उसको क्या करेगी? इंक्वायरी एंड inspect the books. Clear? Any person representation or the information to ROC. आपके शुभ चिंतक बहुत होते हैं. बराबर है? वो ROC को इन्फॉर्म कर दे. ROC सामने से which is known as suo motu. ठीक है? और information available with the registrar. The satisfaction of the registrar that the business is carried on for the fraudulent or the unlawful purpose. Second, non-compliance of the provision of the act. Third, grievances of the investors are not being addressed. ये सब डेटा किसके पास होते हैं? You have submitted the data to the ROC and ROC on the inquiry they found that, oh sir, these are the loopholes or the lacunas we can find in your a financial statement or in your records, in your information, in your justification or explanation or in your documents. Getting my point? Then what are the actions to be taken by the registrar? तो सबसे पहले रजिस्ट्रार क्या इश्यू करेगा? ऑर्डर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. किसको ऑर्डर इश्यू करेगा? कंपनी. नाउ फॉर कैरिंग आउट द इंक्वायरी आफ्टर बीइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बाय द कंपनी. नाउ पहला ऑर्डर किसने इश्यू किया? आरओसी ने खुद या तो किसी के कहने पे कि किसी ने रिप्रेजेंटेशन किया कि भाई इनका इंक्वायरी होना जरूरी है. तो अनदर इज द ऑर्डर और द इंक्वायरी और इंस्पेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बोलेगी? डायरेक्ट कंपनी को बोलेगी? किसको बोलेगी? आरओसी को बोलेगी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. इफ यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर, यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट. RD will issue a D number to you. Now you will inform to the company will inform to the
आरओसी। तो अल्टीमेटली आपने डीम नंबर लिया किसके पास? गवर्नमेंट के पास से लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट. सो हियर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व. सो हियर इन दिस केस, if the CG is satisfied that the circumstances so warrant, CG may order an inquiry, and that inquiry by whom? Registrar or inspector appointed by the. Second one is order the inspection of books of account and papers. यहाँ पे इंस्पेक्शन कौन करेगा? नहीं, इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि पावर्स किसको डेलीगेट किया हुआ था? आरडी को. याद आ रहा है ना सब कुछ? नाउ हियर द ऑर्डर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ अ बुक्स, द इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स बाय एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इट मे बी लाइक अ SPO, SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस. याद आया? SFIO पहली बार नाम सुना है? ठीक है. मे बी पॉसिबल दैट if the case is so complex and there is a possibility of the huge amount of the fraud, then the case will be assigned to the SPO. तो SPO को दे दो. बराबर है. अब SPO के पास केस जाएगा ना, तो जितनी भी अथॉरिटी एग्जिस्टिंग केस चल रहा है ना, वो सब केस क्या कर देगी? टेम्पररी स्टॉप कर देगी, और जो भी डिटेल्स उनके पास है वो सब डिटेल्स किसको दे देगी? SFIO को. Now because this is the topmost regulatory body, उसका नाम क्या है? SFIO, Serious Fraud Investigation Office. याद रहेगा? वो पूछेंगे because most of the cases which involves the serious fraud, fine, it has been assigned to SPO. चलो सर, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? सर जो ध्यान रखना है वो ये है, ये कौन सा वर्ड यूज हुआ है? यहाँ पे कौन सा वर्ड है? इंक्वायरी. और यहाँ पे कौन सा वर्ड है? यहाँ पे कौन सा वर्ड है? इंस्पेक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्लियर? सो द ऑर्डर ऑफ द इंक्वायरी और द इंस्पेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. द नेम इटसेल्फ सजेस्ट ऑर्डर किसका? इंक्वायरी या तो और इंस्पेक्शन. सो दिस इज रिलेटेड टू इंक्वायरी, दिस इज इंस्पेक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो इंस्पेक्शन. में 2 नंबर देता हूँ. आई होप क्लियर गाइस. तो सेक्शन 206 क्लियर. रिलेटेड टू व्हाट? पावर. किसके पास है? आरओसी के पास. कौन सा पावर है? आई. इंक्वायरी, सॉरी, फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. याद रहेगा, क्योंकि इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा है ना, आपको ऐसा रहेगा कि भाई पहले क्या आएगा. तो सबसे पहले क्या करोगे? इंस्पेक्शन, उसके बाद और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन. क्लियर? दया कुछ तो गड़बड़ है. Now, conduct of the inspection and the inquiry, section 207. It is a duty of directors, officers and employees. कौन सी ड्यूटी है यार? जो मांगे वो दे दो उनको. बराबर है. तो मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. टू प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट, फर्निश द इंफॉर्मेशन, गिव द ऑल असिस्टेंस. पावर ऑफ रजिस्ट्रार्स और द इंस्पेक्टर. अभी ये इंस्पेक्टर may be appointed by the central government. So they can make a copies, they can place identification of mark. सर ये important है, ये देखना पड़ेगा. तो they can make identification of, जरूरत पड़ी तो वहाँ पे स्टिकी नोट्स लगाएंगे. बराबर है. और स्टिकी नोट में लिखेगा कि भाई इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए. पैसा घूम फिर के वापस आ रहा है, PMLA हो रहा है. व्हाट इज PMLA? प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, प्रोसीड्स ऑफ. लग रहा है पैसा घुमा रहे हो आप लोग. ठीक है, पूछना पड़ेगा. क्लियर? रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर टू एक्सरसाइज सर्टेन पावर्स ऑफ. उनके पास कौन सा पावर होगा? सिविल कोर्ट का. जब भी सिविल कोर्ट का पावर होता है तो मैंने बताया था देसी पावर रखने. याद? बराबर है. डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, एनफोर्समेंट ऑफ द पर्सनल अटेंडेंस. बराबर है. कमीशनिंग, समनिंग. बराबर है. एंड इंस्पेक्शन. ये आई एस कर दोगे तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे समनिंग तो है ही. बराबर है. कौन सा पावर होंगे उनके पास? सिविल नेचर के. सिविल नेचर का मतलब समझ में आ गया? क्रिमिनल नहीं. SFIO के पास है. देखते हो. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कन्विक्शन ऑफ एनी डायरेक्टर ऑफ ऑफेंस. सर लगा ये इन्वॉल्व है तो वैकेशन ऑफ, चल भाई खाली करो. बराबर है. और दूसरा
disqualified from holding any office in the company. Clear? This is all about 207. 206 clear? 207 clear. Now moving further for section 208. Report on the inspection made. शायद आपको पता हो तो एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा. अगर जब भी आप इंस्पेक्शन स्टार्ट करते हो तो इंस्पेक्शन की एक रिपोर्ट होगी कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड और सिनेरियो और सिचुएशन क्या है. सो रजिस्ट्रार और द इंस्पेक्टर, सबसे पहले रिपोर्ट बाय हुम एंड टू हुम. रिपोर्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन हुआ. इन्वेस्टिगेशन किसने किया होगा? इंस्पेक्टर ने या तो रजिस्ट्रार ने. इंस्पेक्टर वर्ड आता है उसका मतलब किसने अपॉइंट किया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो रिपोर्ट इन अ राइटिंग किसको सबमिट करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करना है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर किसको डेलीगेट किया है? तो चलो आरडी के पास. कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट. डिस्क्रिएशन ऑफ द रजिस्ट्रार और द इंस्पेक्शन इंक्लूड्स द रिकमेंडेशन. अगर कोई है या रीजंस है या इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है तो वो मेंशन करना पड़ेगा. बराबर है. द रिपोर्ट मे बी accompanied such documents as it deemed fit. This is about section 208. 8. 206 clear? 7 clear? 8 clear. 8 में क्या था? नॉर्मल रिपोर्ट. इंस्पेक्शन किसने किया था? या तो रजिस्टर आरओसी. ये रिपोर्ट किसको सबमिट करवाएंगे? कम टू सेक्शन 209. सर्च एंड सीजर. सर्च सीजर इन्वेस्टिगेशन होगा. रेड मूवी देखा था? रेड शाहरुख खान मूवी देखा है? अजय देवगन है ना? वो सब लोग गांव वाले उसको मारने के लिए आते हैं. फिर कहां से कुछ पिलर्स में से निकलता है ना, बहुत सारा सोना होता है. एनीवे, सर्च एंड सीजर. सर्च एंड सीजर ऑफ whose books of account? Whose books of account? Company, KMP, director, auditor and PCS. बराबर. उसके भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे. पावर ऑफ द रजिस्ट्रार. क्या करेंगे? पावर क्या है? एंटर, सर्च द प्लेस, सीज द बुक्स, प्लेस द आइडेंटिफिकेशन, मेक अ कॉपी एंड डील द बुक्स एंड द पेपर्स इन सच मैनर एज एमी कंसीडर. अभी उस टाइम पे कंपनी ऐसा बोल सकती है कि भाई मुझे अपनी कॉपीज तो थोड़ी दो, मुझे जेरोक्स निकलवानी है. क्योंकि सर्च हो गया, हमने सीज कर लिया, तो अभी पेपर सब किसके पास है? पेपर्स किसके पास है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के पास है. ऐसा समझ के चलो. अभी उसको सीज करने से पहले उसको कॉपी निकालनी है तो वो निकाल सकता है. यस. क्या है? बिफोर सीजर. बट खर्चा कौन देगा? कौन बाय द कंपनी. वो बोलेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दे, वो नहीं चलेगा. कंडीशंस फॉर द एंट्री. अब ये देखो ना, ये कैसा कौन सा वर्ड बोला? एंट्री. आपने देखा होगा स्पेशल 26 हुई. ये बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है. स्पेशल 26, उसके बाद अभी मैंने जो बोला वो कौन सा मूवी बोला? रेड. एंट्री. उन लोगों की एंट्री देखने में मजा आती है. सुपर. कसू हो ही नहीं. हमने देखा स्पेशल 26 में सुपर कुछ आता नहीं था, फिर भी ऐसे फटाफट दरवाजा खोलेंगे, उतर जाएंगे, ऐसे फाइल हाथ में होती है. बराबर. कोई पढ़े लिखे नहीं होते, बीकॉम होते हैं. मैं आपको बताऊं, ये तो रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए. आई सीन द पर्सनल डे. बराबर. फिर सब कुछ क्या करेंगे? ऐसा कर दो यहाँ से कोई हिलेगा नहीं, मोबाइल फोन कट कर दो, वे पे इंटरनेट कट कर दो, ये सब कट कर दो, आप बैठो. फिर बैठेंगे, फिर एमडी के कैबिन में. बाद में बताऊंगा प्रोसेस. नहीं, ये चालू है, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. फिर बोलेंगे नाश्ता मंगवाना है, तो एमडी नाश्ता मंगवाएगा, खाने पीने का बंदोबस्त करेगा. बराबर. सब कुछ चीज़ें सील हो जाएगी. एनी डॉक्यूमेंट्स, एनी हार्ड कॉपी, डिस्क, पेन ड्राइव, वट एवर दे हैव. एम्प्लॉइज को बोलेंगे यू कैन नॉट लीव until we give the permission. तब तक बैठे रहने का. You cannot call. Simply you can walk, you can move, you can talk. सब कुछ इधर चलता रहता है. बराबर. Then बाहर जाने का नहीं, so they have to make some arrangement for food, snacks and etc. All these costs to be borne by who?
Then they will collect the entire data. Then no, they will call the press. They will call the press. बोलना पड़ेगा यार, बराबर. And then they will inform, and very next day in the morning, or even it may be possible in the evening, you may find the news. It is available on the news channel. We read over. The moment the news come, the prices of that shares, that company. चलो सबसे पहले कंडीशंस, कौन सी कंडीशन? एंट्री, फिर सर्च, फिर सीजन. बराबर है, एंट्री करेंगे, फिर सर्च होगा, फिर. But what are the conditions? Registrar or the inspector has a reasonable ground to believe that the books and the papers are likely to be destroyed, mutilated, altered, falsified or secreted. And उसके लिए आपके पास स्पेशल कोर्ट्स के ऑर्डर होने चाहिए. आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास आपके सर्च वारंट है, अरेस्ट वारंट है, ऐसा बोलते हैं ना. Warrant सही है ना, otherwise you cannot enter into the any premises of any personal person. माने there is a what we can say, you are attacking on the personal reputation of the person, which is known as defamation. You might be knowing this word. Now आपकी प्रॉपर्टी में वो एंटर हुए, प्रॉपर्टी में जो गुड पेपर्स थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, now it is being seized, search and seize. Now sir, in how many days they have to return the books and the papers seized? Within a 180 days of the seizure. Maybe called for the further period of 180 days if they needed again. बराबर है. चलो, I hope it is clear to you guys. 206 clear, 207, 8, 9 clear, 10 है नहीं, 11 है नहीं, सीधा 12 पे आ जाओ. 202. आगे बढ़ते हैं. इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय SFIO. व्हाट इज SFIO? फ्रॉड नहीं पता है तो ऊपर लिखा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SFIO. बराबर है. चलो, मोस्ट सेक्शन 212 212 अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है. सो द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू असाइन द इन्वेस्टिगेशन टू सीओ. अभी ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. सीजी असाइन द इन्वेस्टिगेशन इफ द सीजी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द इन्वेस्टिगेशन बाय द सीओ इज नेसेसरी. सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये जरूरी है, तो अभी सीओ की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी? फर्स्ट, ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार और द इंस्पेक्टर अंडर 208 में रिपोर्ट हुआ था. बराबर है. वो रिपोर्ट के बेसिस पे ये लोग स्टार्ट करेंगे. कंपनी द इंटीमेशन ऑफ द एसआर रिक्वेस्टिंग द इन्वेस्टिगेशन to the central government कि भाई PO को बुलाओ. If it is in a public interest, on the request from the department of the central government या तो state government, then the case will be assigned to whom? PO. Effect of assignment of the investigation to SFIO. Now, moving on to this topic, let us understand one concept we have seen in insurance and even in the banking also कि भाई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास पावर आ जाता है. हमने आईबीसी के केस में भी ये चीज देखी थी कि भाई मान लो कि भाई एक बॉडी अपॉइंट हुई है, अपॉइंट हो गई, तो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सब पावर्स उसके पास चले जाते हैं. याद आया ये सब चीजें? जो केस चल रहा है वो चलेगा ही चलेगा, जो केस कंपनी ने किसी और पे की है वो भी चलेगा. बराबर है. सेम वे यहाँ पे आपने केस किसको दे दिया? SFIO. तो SFIO का एक डायरेक्टर होगा, SFIO का डायरेक्टर होगा. ठीक है. SFIO एस्टैब्लिश्ड बाय द सीजी. बराबर. नाउ एनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द सीजी और एनी एसजी शैल नॉट प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन. रुक जा भाई, क्योंकि बीच में कौन आ गया? PO. बराबर है. So if an investigation has already been initiated, then it shall not be processed
further. And concerned agency shall transfer the relevant documents and the records to the SFI. भाई SFI को दे दो. Now, who has forwarded the case to SFI? So report prepared by whom? Submitted to whom? Matter over? The power of the investigating officer. ये director. SFIO का director. Director मैंने company director नहीं है. SFIO का director. Appoint the investigating officer. Now, conduct of the investigation by the investigating officer and जो भी powers 217 में दिए गए हैं वो सब powers investigation officer को मिलेंगे. That we will see in the next part. I hope it is clear. तो मैटर जो है वो सिंपल सी है. 212 में केस किसने असाइन किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट. किसको असाइन किया था? बराबर है. और क्यों, कौन से कंडीशन के बेसिस पे कि जो रिपोर्ट 207 में बना था उसके हिसाब से आप सर्च करो. बराबर है. सर इफ इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो दैट्स व्हाई इट इज असाइन्ड टू यू. बराबर है. और इट मे बी एनी डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, दे थिंक दैट द डिटेल्स शुड बी केस शुड बी हैंडल्ड by the SFI. Now conditions for release on a bail. उसका मतलब ये जो ऑफेंस होगा ना ये बेलेबल ऑफेंस होगा. कैसा ऑफेंस होगा? बेलेबल ऑफेंस. I think cognizable and non-cognizable. You might be knowing these two words. बेलेबल का मतलब यहाँ पे बेल मिल सकती है. जनरली बेलेबल ऑफेंस का जो पीरियड रहता है वो लेस देन 3 years का रहता है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट या पनिशमेंट 3 साल से कम रहती है और इतना सीरियस नहीं होता है. फॉर एग्जांपल ब्राइब, रॉबरी एक्सेट्रा. बट नॉन बेलेबल जनरली लाइक अ रेप, देन आफ्टर मर्डर, ठीक है, वैसे ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें बेल मिलती. Why I am discussing all this thing with you guys? Because you need to understand the difference between the bailable offense and non bailable. तो यहाँ पे बेल मिल रही है उसका मतलब ये ऑफेंस है, बट कैसा ऑफेंस है? बेलेबल ऑफेंस. Now, conditions for release on the bail of a person accused of offence covered under 447. 447 में शायद आपने पढ़ा हो इंटर लेवल पे, तो वहां पे आता था if the public fraud is involved. और आपको पता है यहाँ पे हमने अभी अभी देखा कि पब्लिक इंटरेस्ट है इसलिए पब्लिक फ्रॉड होता. तो पब्लिक फ्रॉड कहाँ पे, कौन से सेक्शन में जाता है? 447 में. Opportunity to the public prosecutors to oppose the bail applications रहती है. Satisfaction of the courts on a reasonable ground to believe he is not a guilty. तो फिर उनको बेल मिल जाती है. Satisfaction of the court that not likely to commit any offense while on a bail. तो आपको बेल मिल सकती है. Release on a bail in a special circumstances for any person who is age less than 16 years or a woman or a sick or an infirm. Release if the special court so directs. बराबर है. तो आपको फिर उस हिसाब से बेल मिलेगी. ये सब चीजें इसलिए लिख रहा है, प्रोसेस है भाई, प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी. अभी मैंने क्या बोला कि कंपनी में वो लोग आ गए, कंपनी में आने के बाद फिर वो एंटर हो गए, उसका मतलब मैटर इज ओवर. बराबर है. इफ गिल्टी इज फाउंड, क्योंकि इट इज अ ड्यूटी कि अगर आपको वो लोग अरेस्ट करके लेके जाते हैं तो यू विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 hours. दिस इज अ कंडीशन. आपको पता है, रूल पता है ना? कोई भी बंदे को अरेस्ट करते हैं उसके 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा. और मैजिस्ट्रेट उसके बाद या तो बेल देगा या तो फिर कस्टडी देगा. समझ में आई बात? दैट इज द केस. नेचर ऑफ ऑफेंस कवर्ड अंडर 447 इज कैसा है? शैल बी कॉग्निजेबल. Cognizance of the offence by the special court. A complaint is made in a writing by director of SFIO or any other officer of the central government authorized. Arrest of the person who is a guilty of offence. अभी उसको अरेस्ट करेंगे. जनरली वो MD लोग होते हैं, प्रमोटर्स लोग होते हैं. बराबर है. Power with whom? Any officer not below the rank of AD, assistant director. He has a power to arrest. Ground of arrest. They have a reason to believe that they are the persons who are guilty of offense.
इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है. नॉर्मली आप इतना समझ के चलो कि अगर if he feels that if they found that the reason to believe that the person is of the guilty of offense, तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट्स टू बी फॉरवर्डेड टू SFIO. ये कौन सबमिट करेगा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. किसने अपॉइंट किया था? डायरेक्टर. किसके डायरेक्टर ने? SFIO के. SFIO को केस किसने दिया था? अभी मेरे को समझ में आ गई. तो ऐसे करते करते डिस्कस करते करते पढ़ोगे तो ये इजी हो जाएगा. पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने लोग इन्वॉल्व है, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, फिर सोचना पड़ेगा कि प्रोसेस कहाँ से कहाँ जाती है. बराबर है. विद इन 24, बट ये बढ़िया सी चीज है, इन अ सील्ड एनवेलप. एक और मूवी मुझे याद आ गई, दृश्यम. दृश्यम मूवी देखा है? अभी आप बोलोगे कि सर दिस इज अ कंपनी, matter related to the company, as we are discussing currently the company which is artificial person in the eyes of law, and over there is a natural person. तो आपने दृश्यम मूवी में देखा था, वो इट इज नॉट रिलेटेड टू कंपनी. एक और मूवी है कॉर्पोरेट, कोई बापा बासु है उसमें, पीपा बासु सॉरी. फ्री टाइम मेरे से दिमाग में अभी पता नहीं, वो जब छोटा था ना तब से फिट हो गया ये बेनू नामन नहीं है. within 24 hours the copy of arrest order and the material in a possession. पता है वो लोग जब दृश्यम में ना, वो उनको जो चीजें मिलती है वो एविडेंस एक बॉक्स बनाते हैं, उसके ऊपर सील कवर कर देते हैं और वो सील कवर को लेके जाते हैं एविडेंस रूम में जहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है. सेम यहाँ पे वो लोग आए, रेड किया, वहां से सर्च किया, एंटर हुए, सर्च किया, सीज किया, जो भी बनाया हुआ है वहां पे सब कुछ चीजें रखा. मटेरियल इन अ पोजीशन इन अ सील्ड कवर, इट इज फॉरवर्डेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द अरेस्ट ऑर्डर एंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. कितने पीरियड तक रखने का? 5 years. अरेस्ट ऑफ एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन कंपनी विद द प्रायर रिटर्न अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. कोई बंदा है तो फिर उसकी अप्रूवल चाहिए. पर्सन अरेस्टेड टू बी प्रोड्यूस. अच्छा मैंने बोला था वैसे दिस इज नॉर्मल कंडीशन बिफोर द स्पेशल कोर्ट और द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट विद इन 24 hours excluding the time necessary for the journey. तो बट ऑब्वियस इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई फ्राइडे का तो सैटरडे पकड़ाऊं, જેમ કે રવિવારે રજા हो, बराबर ना. तो फिर एक दिन आपको वहां पे रहना पड़ेगा. गेटिंग माय पॉइंट. तो वो भी 24 hours हो, वर्किंग 24 hours. Conditions for the arrest. Arrest order shall be signed. It should be arrest reasons shall be recorded in writing. The person who is arrested shall be informed of the कि आपको क्यों अरेस्ट किया जाता है. मूवी में भी देखा होगा आपने, आपके पास अरेस्ट वारंट है, क्या किया है मैंने, आपने इन लोगों का खून किया है या तो ऐसा किया है, क्राइम किया. रीजन शुड बी मेंशन. बराबर है. अरेस्ट रजिस्टर टू बी मेंटेन एट द, फिर वो रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई entries of the person arrested, date, time shall be made in the arrest register immediately on the receipt of the documents. सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन रहता है उनके पास, एवरीथिंग एवरीथिंग. ठीक है. आप देखना कभी कभी लोग जेल से भाग जाते हैं, 10 साल के बाद भी पकड़े जाते हैं, 10 साल के बाद भी उनके पास they have the super, so we have very traditional way of maintaining the register. Fine. So अभी तो ट्रेडिशनल था तो इतना स्ट्रांग है, तो अभी तो डिजिटलाइज हो गया, तो आप समझ सकते हो. एंड स्टिल in many cases when you visit the government office still they are using the a big चौपड़ा sort of thing, book sort of thing. बराबर है, अभी भी यही चीजें चलती है. Let me share my experience with you. When I applied for the what we can say tenant registration online, Madhuwar, tenant registration online. Fine. So I applied. Then you have to select the jurisdiction. The house that you have taken on a let out, that is on a rent, that falls under which police station. So you have to select. So when I select that police station and then submitted the application along with these, rent agreement and etc., notified by the notary, then they will give the approval online.
and they have the freedom to check the visit the house. But मैंने तो ऑनलाइन करवाया. Now second time when I uploaded the documents, at that time वो जाता था बिल्कुल रूरल एरिया में. अभी रूरल एरिया में जाते ना, हम लोगों को ऑनलाइन पता नहीं अप्रूवल कैसे देने का. 6 दिन हो गए. एक्चुअली द मोमेंट यू अपलोड, वेरी नेक्स्ट डे और विद इन 2 days इट विल बी क्लियर्ड और अप्रूव्ड. 6 दिन हुए, अप्रूवल ही नहीं आया. 7वें दिन गया, अप्रूवल ही नहीं आया. फिर फोन करके पूछा, नहीं तो एप्लीकेशन पड़ी हશે ત્યાં તો તમારે વિઝિટ કરવી પડે. So when I visited over there, मैंने पूछा कि हमारी एप्लीकेशन हाँ हશે, बोलो ने શું થાય. तो मैंने बोला मैंने ऑनलाइन किया हुआ. तो यूं हमने नहीं आवड़તું કે वी डोंट नो हाउ टू ऑपरेट. हाँ, एक सर है, मैंने एक बंदा जिसको अपॉइंट किया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो आज आया नहीं है. उसको आता है बट वो आज आया नहीं है. मतलब मैं तो 6 दिन 7 दिन हो गए वे, अप्रूवल तो करोगे, अप्रूव करोगे तो फिर मैं आगे प्रोसेस कर पाऊँ. बोला ऐसा. Now you understand, when you are getting the online approval, how can they demand? I hope you understand. So मैंने बोला ऐसा है, लास्ट टाइम हो गया, अभी तो ऐसा है. So even at the rural area, they don't know how to operate the computer and etc. We are talking about the cyber crime. आप जब भी कंप्लेन करते हो, अब हमारे साइबर क्राइम से तो अच्छी चीजें आप लोगों को पता होगी. Honestly, have you ever visited the cyber crime cell? आप लोगों के पास अच्छी डिटेल्स होगी. अभी तो ऐसे मोबाइल्स अच्छे अच्छे आ गए हैं कि इफ यू नो देयर आर सम फीचर्स इन द मोबाइल कि अगर वो गुम हो गया है और आप ऑनलाइन, अगर वो सिस्टम ऑनलाइन है, आई हैव सीन. तो गूगल पे आप एक ऐसी सिस्टम है उसको कनेक्ट करते हो, अगर वो मोबाइल कंटिन्यू चालू है तो अलार्म बजता है. अगर आपने मोबाइल स्विच ऑफ भी कर दिया होगा ना, तो भी अलार्म बजेगा, और ऐसा अलार्म बजेगा जिसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है. बराबर है. इट हैपन, आई ट्राई, एक फ्रेंड था उसके लिए ऐसा हुआ था. इतनी आवाज आए, देन व्हाट हैपन, 3 से 4 बार ऐसे अपलोड किया, गूगल से अपलोड किया, ये किया, आवाज बजती ही जाए. अभी अब आवाज बजती है, और कैसी आवाज बजती है पता है? पुलिस का जो सायरन होता है ना, वैसे. माने वो आजू बाजू की पब्लिक आपको देखेगी, सिंपल सी चीज है. बराबर. देन व्हाट हैपन, उसने फिर मोबाइल ऑन किया. उसको पता चला कि भाई ये कुछ गड़बड़ है. उसने ऑन किया है, एंड द पर्सन वाज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू कॉल. बराबर है. पूछा, हाँ તમારો મોબાઈલ મારી પાસે જ છે. मैंने तो पहला स्विच ऑफ શું લેવા કર્યો હતો. बराबर है. तो बोला कि हाँ आप यहाँ पे मैं हूँ, आप आके ले जा सकते हो. इट वॉज 45,000 रुपीज मोबाइल फोन. 45,000 रुपीज. ठीक है. बट यू अंडरस्टैंड कि दीज आर द सिस्टम. अभी पहली चीज ऐसी हुई कि तो उसका जो हस्बैंड था वो पुलिस स्टेशन में गया, कंप्लेन करवाया. हाँ मैं साइबर वाला शोधे છે. સાહેબ ક્યારે શોધે ખબર છે? 4 દિવસ રહીને ફોન આવ્યો કે તમારો મોબાઈલ આ એરિયામાં એકવાર દેખાયો હતો. હવે જે લેવા ગયો હતો ને એ એરિયા ઓન થયો, ધેટ્સ વાય નો દે ટ્રેક. 3 દિવસ પહેલા તમારો મોબાઈલ આ એરિયામાં ટ્રેક થયો. દેન સી ટોલ્ડ, સાહેબ મળી ગયો મને એ જ દિવસે એ જ ટાઈમે હું કલેક્ટ કર્યો. કેવી રીતે મળ્યો? ધીસ આર ધ સિસ્ટમ. અમને બી શીખવાડો ને. એન્ડ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ રિયાલિટી. ओके फाइन, मूविंग फर्दर. आगे बढ़ते हैं, चलो. कैसे भाई की प्रोसेस देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन देखते हैं. आपको सीखना है तो मुझे बोलना, मैं हेल्प यू. ऐसी सिस्टम अगर आपके मोबाइल में है तो वो 45,000 वाला मोबाइल चला है. सुबह से बैठे हो यार. तो I took 3 lectures, 1.5 hours, 3 lectures, and this is 1.5 fourth lecture. Application by the central government to tribunal for order with regards to the disgorgement. What is the meaning of disgorgement? पहले आप note down कर लो. Disgorgement means
a person or a company is forced, a person or the company is forced to pay back money, to pay back money that they have made illegally, that they have made illegally, comma, by court. The person or the company is force. कौन force कर रहा है? Court. Pay back, वापस कर दो. So application by the central government to the tribunal for the orders with regards to disgorgement. Now the report submitted by the SFIO to CG states that any fraud has taken place in the company, and due to such fraud, a person or the entity has taken undue advantage or the benefit. Illegal हुआ, undue हुआ, and consequences. CG may file an application before the tribunal to pass the order, the disgorgement order, and also holding such person personally. Now, moving further, prosecution by the central government. SFIO submit the investigation report to CG. CG examines the investigation report and obtains the legal advice and issues a direction to initiate the proceedings against the company or officers of the employee. वो किसको बोलेगा? SFIO. Now, sharing the information between SFIO and other authorities. अब वो आप देख सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, वो अब पहला एरो इस साइड वाला है, दूसरा एरो इस साइड वाला है. क्लियर? There is an exchange of the information between the SFIO and other authorities. I hope 212 is clear. This is purely related to SFIO, and I think no need to, there is no any as such stringent provision or the complex provisions that will give you the difficulty sort of thing. I think it is very simple. 213 212 किसके रिलेटेड था? SFIO की प्रोसेस. समझ में आएगी? ओके. 206 भाई 206 पावर अपर रजिस्टर. मुझे लगता है कि मॉर्निंग के लेक्चर अच्छे से करके अभी आप लास्ट में आ गए हो, तो अभी नाउ यू गॉट एग्जॉस्टेड, है ना? एग्जॉस्ट हो गए हो? एग्जॉस्ट हो गए पक्का? ठीक है, चलो 7 बजे छोड़ दूंगा. कैसा लगेगा ना यार मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक बैठने का यार, वेरी हेक्टिक. मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है कि यार आप लोगों को देख विचार नाना छोकरा होने के फ्लो त्रास आप इट इज रिक्वायर्ड. जितना सहलोगे ना उतना आप आगे बढ़ोगे. ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड. बट सहने का माने हंसते हंसते सहने का. हंसते हंसते पे हंसते, यहाँ पे तो हंसी होती है, लेकिन पीछे क्या होता है वो अंदर से तो ऐसा होता है कि साहब होना बंद करें तो सारू. This is a real, expectations from your side. Now come to the 213. Okay, the investigations into the affairs of the company on order made by the tribunal. भाई 212 में SFIO था, जो स्पेसिफिकली बोला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो किसको? SFIO. Now this is the affairs of the company and order made by tribunal. अभी किसी और बंदे ने या तो फिर एलिजिबल मेंबर ने एप्लीकेशन किया होगा कि भाई इसका इन्वेस्टिगेशन करवाओ ट्रिब्यूनल को. सो एलिजिबल मेंबर्स मेकिंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम टू द ट्रिब्यूनल. तो एलिजिबल मेंबर कौन हो सकते हैं जो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन? कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, या तो 100 मेंबर्स और मेंबर्स होल्डिंग 10% of the voting power. The second one is company having a no share capital, then 1/5 of the shareholders, they can make an application for the order of investigation to the tribunal. They can make an application to the tribunal कि नहीं सर अभी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का मुझे कुछ दया, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लग रहा. Now the tribunal at the discretion to the order investigation, discretion to the order to the an investigation into the affairs of the company is required. ऐसा ट्रिब्यूनल किसको बोल रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट.
Now the central government is bound to order the investigation and appoint the inspector for conducting the investigation. And then report start होगा और inspector report submit करेगा किसको? CG को. आपने एक चीज देखी, एलिजिबल पहले तो डायरेक्ट सीजी ने ही बोल दिया था एसएफआई को. अभी यहाँ पे एलिजिबल मेंबर्स दे आर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल इज गेटिंग द मेकिंग इन्फॉर्म टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड द investigating officers and then process the further. On order of a tribunal on a receipt of an application from any person, the opportunity of being heard by the tribunal to all the parties concerned and the tribunal is satisfied, then the business of the company is being conducted with intent to defraud to the creditors, members, or for the fraudulent or the unlawful purpose, or the manner in which the business is carried on, which is oppressive to its members. ऐसा किसको लग रहा है? ट्रिब्यूनल को लग रहा है. कब लग रहा है? When the application is made by the eligible members. Company was formed for the fraudulent purpose. Sir, ऐसा लग रहा है. It is at the opinion of the tribunal that the person concerned in the formation have found guilty of fraud, misfeasance, and other misconduct. And the members of the company have not been given all the information. There is an active concealment of the material fact. छुपा रहा है सर वो लोग. That sort of satisfaction or the opinion on the side of the tribunal. Then tribunal again किसको बोलेंगे? CG को. CG is bound and here's the report. I hope you understand. So the first one here, first one is the order of the tribunal on receipt of application from the eligible members. Now on a second, the order of the tribunal or receipt of the application from any person or otherwise. तो दो चीजें क्लियर हो गई, दोनों अलग अलग है. दो नंबर दे देना, एक नंबर और दो नंबर. सो इट प्रोसेस रिमेन्स सेम नीचे की. बराबर. एलिजिबल मेंबर्स में यू हैव टू रिमेंबर द कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल एंड द कंपनी नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल. करेक्ट. मूविंग फर्दर. 214 215 नहीं है, 216 पे आ जाओ. Now the investigation of the membership of a company. 20216 216 206 क्लियर, 7 क्लियर, 8 क्लियर, बराबर. 212 क्या था? SFI. बिल्कुल. Now investigation of the membership of the company. The discretion of the central government to order the investigation. कैसा है? Suo motu. What is suo motu? खुद सामने से जाके, कोई बोले या ना बोले, मुझे करवाना है इसका इन्वेस्टिगेशन, तो करवाना है. Its own motion. Second, complaint to CG by any person. दो चीजें, किसी ने कंप्लेन किया सेंट्रल गवर्नमेंट को और इन्वेस्टिगेशन हुआ वो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद सामने से इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रही है. Mandatory for the central government to order the investigation. Reference to the central government by the tribunal. 1 नंबर 2 नंबर क्लियर था. एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को किया, ट्रिब्यूनल ने इन्फॉर्म किया सीजी को. नाउ सीजी हैज टू टेक, सीजी इज बाउंड, ऐसा लिखा है. बराबर है. अच्छा, मेंबरशिप इन अ कंपनी को आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा बंदा इन्वॉल्व है, किसका पर्सनल इंटरेस्ट है. सो पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू डिटरमाइन द ट्रू पर्संस who are or have been financially interested in a success or a failure. कभी कभी ऐसे वर्ड यूज होते हैं, पिक्यूनारी इंटरेस्ट. बराबर है. पिक्यूनारी का मतलब होता है मॉनेटरी इंटरेस्ट. Or who are or who have been able to control or materially influence the policy of the company. Who are or have been beneficial owner or the significant owners, beneficial owners of the company. So this is the purpose of investigation. कि इसके पीछे है कौन, who is behind that particular scene. बराबर है. उसमें किसका इंटरेस्ट है, किसका मॉनेटरी इंटरेस्ट है. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है.
आपको पता हो तो वीडियोकॉन वाला केस याद है, आईसीआईसीआई बैंक चंदा कोचर, बराबर है, लोन दे दिया था, बराबर है, सब लोग खुद के ही थे, घर के ही थे, किसी को बताया ही नहीं, बराबर है। तो पता चला कि भाई इसके पीछे इन्वॉल्व कौन है, फिर पता चला चला वीडियो कौन, बराबर है। तो they were associated indirectly with the company and they have the monetary benefit। अच्छा देख रहे हो तो ऑपोजिशन वाले जितने भी लोग हैं वो एवरी टाइम दे आर making a statement that the government is framing the policy keeping in the mind of benefit, providing a benefit to the Adani, providing a benefit to the अंबानी, बिरला, ना ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं वो लोग, बराबर है। ऐसा नाम नहीं सुना, they are playing very safely, बराबर है। Now duties of the inspector to investigate into and report on matters relating to the company and ये इस पे ध्यान देना, ये membership पे and membership। Power of a central government to specify the scope of the investigation, matters to be investigated and the period, बराबर है। आप किसी को केस सौंप रहे हो, असाइन कर रहे हो, तो बोलना तो पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन में करना है क्या, ये देखना स्पेसिफिकली। पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स छोड़ देते हैं। पहले मैं बोलूं वो सेक्शन कट कर दो ना, 218 निकाल दो, 221, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 221, 22, 23, 26, 27, 28 and 229। Now moving further for the procedure and the power of investigation। शायद आपको याद है तो 206, 207, 208 हम जब पढ़ रहे थे वहां पे बोला था कि पावर्स एज पर सेक्शन 217, द पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर एज पर द 217। तो देखते हैं कि भाई इंस्पेक्टर को कौन सा पावर होता है, बट ओवर देयर वी हैव सीन दैट द पावर्स इज लाइक द सिविल कोर्ट, सिविल नेचर पावर इज देयर, and we have seen that the civil nature means desi power। Now powers and the duties with reference to the books and papers means they are talking about information, explanation and documents, very clear। ID, the inspector can pass the order to produce the books and the papers, किसको बोल सकता है, company which is under the investigation and the related companies whose affairs are being investigated under 219। All the officers of the employees, it is a duty, their duty to provide the books and the papers and cooperate in that particular investigation, the inspector, clear। Power of an inspector to require information from any other body corporate, inspector also can issue an order to any body corporate to furnish the information and books of account and the papers, बराबर है। I think ज्यादा कुछ है नहीं, जाने दो ना फटाफट। हाँ, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, ये आप ऐसे करके बोल सकते हो, दिस इज द पावर नंबर 1, this is the power number 2, this is 3। so when you are preparing a notes at your home, बनाते हो ना घर पे notes, हाँ तो रखना, otherwise what happen that you might, शायद आपको घर पे टाइम मिले या ना मिले, बराबर, तो मिलना ही चाहिए टाइम, नोट्स बनानी चाहिए आपको। Power of an inspector to retain the books and the paper of the company and the related company or any other body corporate। Period of retention, कितने पीरियड तक आप वो डॉक्यूमेंट्स रिटेन करके रखोगे, 180, वापस रिटर्न कर देना पड़ेगा, आगे भी कितना पीरियड था, 180, बराबर है। अच्छा, अगेन कॉल अगर मंगवाए, if needed and you have to provide and retain them for the further period of 180 days। Fourth point, power of an inspector to examine and hold। Fifth, notes of an examination,
मैं जो बोलूँ उस पर फोकस करना। आप जब भी नोट्स बनाओ तो 1 2 3 4 5 करके नोट्स बनाना। इंस्पेक्टर हैज एम्पावर टू एक्सरसाइज सर्टेन पावर, और पावर कैसे होंगे? सिविल कोर्ट वाले होंगे। इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ सर्टेन पर्सन का मतलब कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स, their duty to assist the inspector for that particular investigation. This is about 217 powers, total 5 powers याद रहेंगे, नोट बना देना। नहीं, एक वर्ड है, एग्जामाइन एंड ओथ का मतलब होता है कि एक डॉक्यूमेंट्स होता है। जैसे इफ यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर, सो यू हैव टू गिव द कंसेंट। जैसे कंसेंट देते हो तो वो चेक होता है, तो सेम वे यहाँ पे एक ओथ, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। वो चेक करना पड़ेगा कि क्या उसने सबमिट किया है कि नहीं, किया है तो प्रॉपरली है कि नहीं। टू वन एट स्टार्ट करें, नहीं है ना? चलो कौन सा वाला अभी? 219, 219 power of an inspector to issue an order to the company which is under the investigation or any related company, ऐसा ऊपर था, शायद आपको पता हो, एनी रिलेटेड कंपनी। तो सर रिलेटेड कंपनी में कौन कौन सी कंपनीज आएगी? 219। सो द मीनिंग ऑफ द रिलेटेड कंपनी में बी subsidiary, holding, subsidiary of holding, companies, MDs, okay, any body corporate managed by any person as a MD or manager who is a MD or a manager of that company. Any body corporate whose board of directors of the company nominate nominees of such company. Or any other body corporate whose board of director is accustomed to act. शायद आपने प्रमोटर्स की डेफिनेशन देखी हो एज पर द कंपनीज एक्ट, कि जिसके कहने पे सब लोग काम करते हैं, एक्स्टम टू एक्ट, वो डायरेक्ट करता है, उसी हिसाब से काम करता है, बराबर है। सो दे ऑल आर कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड कंपनीज और इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द रिलेटेड कंपनीज। द पावर ऑफ द इंस्पेक्टर इन दैट पर्टिकुलर केस दैट investigate into the affairs of the related company, conditions for conducting the investigation, prior approval of the central government is required, and reporting the results of investigation of the related companies by the inspector। तो वो तो जब इंस्पेक्शन करने जा रहा है तो कंपनी का भी करेगा और रिलेटेड कंपनी का भी इंस्पेक्शन करेगा, बराबर है। आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि वो लोग एक ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसे चार्ट जैसा ऐसा बोर्ड जैसा रहता है जिसके ऊपर सब कुछ चीजें चिपकाई होती है, फिर वो लोग ड्रॉ करते हैं कि इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई द वेरियस ब्रांचेस, कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ दे कैन आइडेंटिफाई, एंड दिस इज अ रियलिटी। जो आप देखते हो वही है, वही रियलिटी है, बट उन लोगों की थोड़ी रियलिटी अलग होती है, बराबर। एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू आर फाइलिंग एनी फॉर्म टू द एमसीए, वो लोग आपसे पूछेंगे आप कौन सी कंपनी है, होल्डिंग है, सब्सिडरी है, गवर्नमेंट है। अगर होल्डिंग होगी और अगर आपकी कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, तो जैसे आपने सब्सिडरी पे क्लिक किया, ठीक है, तो आपकी होल्डिंग कंपनी की डिटेल्स उसके पास आ जाएगी, बराबर। जिसको आप लोग बोलते हैं प्री फिल। देयर इज वन ऑप्शन कॉल्ड प्री फिल ऑप्शन। ओके, नाउ कम टू द सीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय द इंस्पेक्टर। कंडीशंस अभी ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। सीजर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय द इंस्पेक्टर, उसमें याद रखना एंटर, सर्च एंड सीज, बराबर है। आप लोग कौन से पेज अभी आना है? 224 224। समझ में आ रहा है ना? अननेसेसरी मैं स्पीड नहीं कर रहा हूँ, चलेगा ना? वैसे आपको लगेगा कि थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। Actions by the central government as a result of the inspectors report। अभी सुनो, केस असाइन किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीओ को, इस पीओ ने रिपोर्ट सबमिट किया,
फिर वो रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस लिखा होगा, रीजंस लिखा होगा, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी स्टडी करेगी और स्टडी के बाद वापस पीओ को बोलेगा कि भाई इसके ऊपर अभी केस करने का प्रोसेस स्टार्ट करो, इनिशिएट द प्रोसिक्यूशन। ऐसा आगे आया था रिपोर्ट रीड करने के बाद। नाउ actions by the central government as a result of the inspector's report. Prosecution by the prosecute any person who is guilty of offense which is criminally liable, and duty of officers and employees to give the central government all necessary assistance. ऐसा लग रहा है तो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241 और and 271 by the CG. Sir, 241 is make an application to the tribunal for claiming a relief from the operation and mismanagement. वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ऑपरेशन और द मिसमैनेजमेंट का तो मतलब आपको पता कि भाई कंपनी में कोई चीज मिसमैनेज हो रही है। ऑपरेशन का मतलब पर्सन जो है वो अनएथिकली किसी का बेनिफिट ले रहा है, ऐसा लग रहा है, बराबर है। And both the word operation and the mismanagement, both it is nowhere defined in the Companies Act, but still there is an entire chapter. Or and present a petition to the tribunal under 241 for winding up the company on just and equitable ground. ऐसी एप्लीकेशन कौन कर सकता है? सीजी करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोसीडिंग्स बाय द सीजी फॉर द रिकवरी, ये पहला ऑप्शन ये, हाँ, प्रोसिक्यूशन। दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन। These are the actions ना, so you can, when you are preparing a note, this is action number 1, this is action number 2, okay, third one is action number 3. Proceedings by the central government for the, चलो सर स्टार्ट करो, रिकवरी करना और डैमेजेस और द प्रॉपर्टी। Fourth one, so far as the proceedings of the recovery is concerned, if recovery of the damages in respect of the fraud or the recovery in any property, then central government itself bring a proceedings and company or a related company has to indemnify. You know the meaning of indemnify? To make the good the loss. बराबर है? To any cost or the expense incurred by the city. Actions समझ में आ रही है? Actions कौन ले रहा है? Central government. Fourth, disgorgement. You know the meaning of disgorgement? A person or the organization is forced to pay back the money that you earn illegally by the court. So the disgorgement of the gain or the personal liability, then application by the central government to the tribunal कि भाई आप ये order pass करो, order for the disgorgement and order for holding such person personally liable. Clear? Now, section number 225, expense of the investigation. पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। और केस किसने दिया था? किसको दिया था? पीओ, या तो फिर ट्रिब्यूनल को भी दे सकते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस होता है दैट एक्सपेंस इज पेएबल बाय द, किसका है ये? इन्वेस्टिगेशन का, हाँ, ओके। हु इज लायबल टू रिम्बर्स द सीजी द एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन? अ पर्सन हु इज प्रोसिक्यूटेड एंड इज कन्विक्टेड, देन द अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय द a company or related company, ये रिम्बर्स करेगा, हाँ, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, एज द अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अ पर्सन इज ऑर्डर टू पे द डैमेजेस और रिस्टोर द प्रॉपर्टी, वो तो ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर में जो भी बोलेगा कि कोर्ट ऑर्डर में लिख के दे देता है कि भाई आपको रिम्बर्स करना पड़ेगा। And company and the related companies in whose name proceedings are brought for the recovery of the damages of the property. In that case, these are the circumstances where they are liable to reimburse the central government the expense of the investigation. So I think done. This is all about the chapter number triple I. पहले I क्या था? पहला I क्या था? इंस्पेक्शन। दूसरा, तीसरा, 206 क्या था? पावर्स। किसके पास था? आरओसी के पास। वेरी क्लियर. In that case, matters related to I, E and D. What is I? E and D.
डॉक्यूमेंट। देन वी स्टार्टेड कि भाई अपॉइंटमेंट होगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई नहीं इंस्पेक्शन करना पड़ेगा तो फिर आप इंस्पेक्शन के साथ जाओगे, बराबर है। उसके बाद इंक्वायरी होगी, उसके बाद फिर सर्च सीजर सब कुछ होगा, बराबर है। इन्वेस्टिगेशन हमने देखा 212 में पीओ भी करेगा, उसके बाद वो ट्रिब्यूनल पे जाएगा। जनरली अगर व्हेन यू आर मेकिंग एन एप्लीकेशन बाय द स्पेशल eligible member, then the eligible member make an application to the tribunal will forward it to the central government, and the central government is bound to take the actions. So the entire part related to the inquiry, investigation, inquiry, inspection, inquiry and investigation, I hope it is clear so far as section number 206 to 20229 is concerned, where the most important sections we have seen, correct? So I am concluding my session over here, okay, because I want to take up one chapter for operation and the mismanagement, but I cannot complete in 10-15 minutes, नहीं होगा तो फिर मैं ये चैप्टर नेक्स्ट टाइम, माने मोस्ट प्रोबेबली कल आई एम नॉट अवेलेबल टुमारो, फाइन, आई विल बी एट द गांधीनगर, सो हम लोग मिलेंगे संडे में, ठीक है। यस, सो फार एज द चैप्टर्स आर कंसर्न, वी आर लेफ्ट विद द 3 chapters. The first related to the operation and the mismanagement, along with the corporate governance, and the third with the FEMA. FEMA का एक बाकी रखा है मैंने, वो तो है ही, आगे का तो 1 से 122 तो कंपलसरी है, मैं पढ़ाऊंगा, बराबर है। अरे हाँ, वो वाला मैं तैयार करके दे दूंगा पक्का। क्या 64 1 से 122 तक उसका समरी होगा, बराबर है। समरी हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे फटाफट, विल टेक 2 lectures, क्योंकि एक दिन में तो होगा नहीं, बराबर है।